यार वो पीछे से भीड़ आई और उसमें मेरी बहन दब गई। रात में मरा है, कहाँ से बीच गई थी हमने देखा नहीं गया। कम से कम 30 आदमी। At least 18 people, including 9 women and 5 children, died in a stampede at New Delhi railway station last night when a surging crowd scrambled to catch trains for Mahakumbh in Prayagraj. According to officials, the incident took place around 10 p.m. India time on Saturday night when a massive crowd gathered at New Delhi railway station's platform number 14. This is where the Prayagraj Express was stationed. Delays in the departures of Swatantrata Senani Express and Bhubaneswar Rajdhani further exacerbated the congestion, leading to overcrowding at platforms 12, 13 and 14. Reports indicate that around 1,500 general tickets were sold, resulting in an overwhelming rush, particularly near platform number 14 and the escalator at platform number 1. DCP Railways. The rush further intensified within 15 to 20 minutes after a special train was announced, prompting passengers to scramble to board it. As the crowd surged, some passengers fainted, sparking rumors of a stampede which further fueled panic. Now, around 10:48 p.m., Delhi Fire Service received a call that 15 people had been injured in a stampede-like situation at New Delhi railway station, following which 4 fire tenders were rushed to the spot. Then around 11 p.m. local time, Ministry of Railways said that the situation was brought under control and the injured had been taken to the hospital. And further to this, Railway Minister Ashwini Vaishnaw also tweeted that the situation was under control. And then around half an hour after that, this is around 11:55 p.m., he again tweeted that 4 special trains will evacuate the unprecedented sudden rush at New Delhi railway station, and that the station has now reduced. Railway Minister Ashwini Vaishnaw then announced a high-level investigation into the incident. As part of this investigation, a 2-member committee comprising top railway officials has been formed to inquire into the cause of the stampede. And post-midnight, LNJP Hospital's Chief Casualty Medical Officer said that 15 people, including 3 children, had lost their lives in the stampede. This is the figure they knew back then, while 10 others are injured in the incident. Railway Protection Force personnel and Delhi police officials assisted in evacuating the stranded passengers and the injured, and later NDRF teams also arrived at the station. Now, earlier today morning, the authorities confirmed that 18 people had died, and that included 9 women and 5 children. Among the injured, the majority of the patients have lower limb injuries, while a few have bone injuries. 4 people are under observation and the rest were discharged after primary treatment. And as reports have now come in, asphyxia has been the main cause of the deaths. Most of the patients are stable, and a team of 15 doctors are taking care of the injured patients. कल 6 बजे घर से निकली थी वो कुंभ जाने के लिए और बोली थी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मेरा गाड़ी है और उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। जब से 9 बजे रात को लगाया उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, रात में भी लगाया स्विच ऑफ फ़ोन उनका जा रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ गई और उनका भाग दौड़ हुआ है। उसमें सुने कि कुछ लोगों का मृत्यु हुआ है। अंदर भी गए थे, वो अंदर वाले बता रहे कि इसमें कोई बॉडी नहीं है, सब बॉडी ले गए घर वाले उनके, और जो घायल है 2 ही लोग घायल हैं, बाकी सब इलाज होकर चले गए। उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, कहने का मतलब ये है। पीछे से भीड़ आई और उसमें मेरी बहन दब गई सर, अभी हॉस्पिटल लेके गए हुए उसे। कैसे बता रहे, क्या तबीयत है उनकी? कुछ तबीयत खराब नहीं है, पीछे से पीला उला निकल रहा है, पीला मुंह से झाग निकल रहा है और हम लोग के ऊपर दबा था। मेरा यहाँ दर्द कैसे हुआ? अचानक सब उधर से आ गए। ये देखिए साड़ी फट गई, सारा साड़ी वाड़ी देखिए सर फट गई। एकदम भीड़ ऐसे आगे नीचे हमारे आगे मोड़ से ऐसे पीछ गई है एकदम, बहुत ही ज्यादा। रहते हम दिल्ली में वैष्णो देवी जा रहे थे, लेकिन आपके साथ के? हाँ जी सब ठीक है जी। आदमी 10-15 आदमी मरा हुआ है, 10-15 आदमी मरा है। रास्ते बीच गई जी, हमने देखा नहीं गया, कोई इंतजाम नहीं था किसी का। भीड़ सिर्फ भीड़ धक्के चल रहे थे, एकदम धक्के।
हर कोच में सेकंड एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट एसी, सेकंड एसी में 500 लोग विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहे हैं। आरपीएफ जीआरपी कुछ नहीं कर रहा है। 139 पे 3 बार कंप्लेंट रजिस्टर कर दी। एम्बुलेंस आ चुकी है प्रेजेंट में 12418 प्रयागराज एक्सप्रेस लगने के बाद में बहुत जबरदस्त भीड़ हुई है। हाँ, अचानक से कैसे सब कुछ होने लगा? भीड़ बहुत जबरदस्त। प्रयागराज जा रहे थे कुंभ जाने के वाले उनके लिए यात्री इनके सारे एकदम छड़ने लगे, जिसका बिना टिकट वाले भी सारे उल्टे सीधे। कितने लोग इंजर्ड हैं? कम से कम 30 आदमी। अचानक भागदौड़ इतना ये हुआ यहाँ पर कि उसके वजह से बहुत ज्यादा और इतना हालत खराब है। हमारा टिकट होने के बाद भी हम वापस जा रहे। कहाँ जाना था आपको? हमें प्रयागराज जाना था। बिल्कुल ठीक है। कैसे कैसे मेरा साला का पैर फ्रैक्चर हो गया वहाँ पे, अभी नीचे खड़ा है। हम लोग 12 लोग करीब जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कुंभ के लिए जा रहे थे, प्रयाग के लिए। लेकिन हम ये रात को 10:10 की ट्रेन थी, प्रयाग एक्सप्रेस। लेकिन हम तो प्लेटफार्म तक पहुंच ही नहीं पाए, पहले ही जीने पर ही डेथ हो गई। मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी थी? कहाँ? आप क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई है। मैं जब वो मूवमेंट करवाने के बाद वहाँ वापस जा रहा था तो मेरे को जाने का रास्ता नहीं मिला, और तब मैंने यहाँ पे नीचे उतर के और प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे, इवन 13 पे भी, और मैंने अपने खुद से एक अनाउंसमेंट किया कि भारतीय सेना की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ऐसा बता रहे हैं कि 2-3 दिन 4 दिन जो भी हो रुक जाइए, आपको जगह नहीं मिल रही है। एक ही ट्रेन में 5,000 10,000 आदमी एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, ऐसा मैंने बताया, अनाउंसमेंट भी किया। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। एक जगह से 2 जगह, इस ट्रेन पे नहीं मिला उस ट्रेन में मिलेगा, उस ट्रेन में नहीं मिला इस ट्रेन में मिलेगा, इस तरीके का एक सिनेरियो बनाया गया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतना बड़ा भगदड़ हो गया और इस तरह का यहाँ पे घटना घट गई। क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था, और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज ए जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। The situation at the railway station is under control now. Passengers have been accommodated on special trains and normal train movement has also resumed. Railways has announced compensation of 10 lakh rupees for the families of the deceased, 2.5 lakh rupees compensation for those seriously injured, and 1 lakh compensation for those with minor injuries. 9 of the Stampede deceased are from Bihar, and Bihar Chief Minister Nitish Kumar expressed condolences on the deaths, announcing to give 2 lakh rupees to the dependents of the deceased and 50,000 rupees to the injured. Prime Minister Modi expressed sorrow over the incident. He is distressed by the stampede at New Delhi railway station. The authorities are assisting all those who have been affected by this stampede. This is what the Prime Minister said. President Draupadi Murmu also gave her statement on this. She is deeply anguished to know about the loss of lives in a stampede at the New Delhi railway station. She extended her condolences to the bereaved families. Now, leaders from across political parties expressed sorrow over the incident. दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। Sad situation. I think honestly, these are the kinds of human losses for which there is absolutely no compensation possible. We've seen an unknown number of deaths in the Kumbh Mela itself. Today's news about the deaths in the Delhi railway station are also extremely upsetting. Whenever we have this kind of uncontrolled number of crowds and people in circumstances like this, it seems to me we are inviting this kind of problem. I think more stringent measures will have to be put in place. Meanwhile, an emergency plan has been put in place at Prayag Junction in Prayagraj. A passenger shelter has been built where passengers will be first assembled before being diverted to their respective platforms to avoid overcrowding. वहाँ पे हमने इन सभी स्टेशनों पे अपना एक सेट प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। किस तरह से लोगों को एंट्री कराई जाएगी स्टेशन में, कैसे एग्जिट होगी। ज़्यादातर स्टेशनों पे हमने जैसे सिंगल साइड से एंट्री और दूसरी साइड से एग्जिट किया हुआ है। इसका फ़ायदा ये है कि लोगों का कोई भी क्रिस क्रॉस मूवमेंट नहीं होता, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट रहता है।
Now, I earlier spoke with Akhil Agrawal from New Delhi. He's the former Director General Signal and Telecommunications at the Railway Board. Here's what he had to say. See, it's very difficult to say at this point of time that what started the stampede. And I am told that the railways have already ordered an inquiry. Honorable Minister has already ordered an inquiry, which will go into the details, and they will have all the resources at their in their hand, in the sense that the CCTV footage, what was the announcement, and how many people were there. They will be able to guess from the CCTV footage. All what I can say is that whatever are the news reports which are coming, that already the Prayagraj was there, and there were 2 other trains were expected at that platform because of their because those 2 trains were delayed, and suddenly there was a rush of 3 trains, and that is what has led to this incident. But this is only on the basis of what the news are coming. Probably the detailed inquiry will bring out the exact fact that what has led to this unfortunate incident.